कंटिन्यू फ्रॉम दिस क्वेश्चन, इसके सेकंड पार्ट को हमने भी कंसिडर करना है, जिसमें आपके पास ये 31 अगस्त 20 का प्रॉफिट, 31 अगस्त 20 मीन्स टैक्स ईयर 2021, क्योंकि करंट ईयर बेसिस की बेस पे हम असेस कर रहे हैं कि ये प्रॉफिट किस टैक्स ईयर में असेस किया जाएगा। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमने सॉल्व की कि नो क्लेम इज मेड टू द सेट ऑफ लॉस अगेंस्ट टोटल इनकम। सेकेंड रिक्वायरमेंट है क्लेम अगेंस्ट टोटल इनकम आर मेड टू ऑब्टेन रिलीफ फॉर लॉस एज अर्ली एज पॉसिबल। सो अगर वर्डिंग आपको एज अर्ली एज पॉसिबल की गिवन है, इट मीन्स आपको करंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर के अगेंस्ट अपने लॉस को यूटिलाइज करना है, प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम के अगेंस्ट। सो इन द फर्स्ट ईयर यू हैव अ trading profit of 20,000, then loss, and then 15 and 22,000. So trading profit in the first year is 20,000, 0 because this in this year loss sustained हुआ था, then 22,000 and then 15,000. और अदर इनकम आपके पास हर साल की मेंशन की गई है 12,000. अदर इनकम इज 12,000. ओके, दिस इज 15,000 इन द फर्स्ट ईयर एंड देन 22,000. सो अब आपने अदर इनकम रिकॉर्ड करनी है. दिस इज 12,000 in each year. So हम चूँकि लॉस को सेटअप कर रहे हैं अगेंस्ट द टोटल इनकम, तो ये लॉस आपके पास अगर टोटल इनकम के अगेंस्ट सेटअप करना हो तो ये टोटल इनकम ऑफ करंट ईयर एंड टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर के अगेंस्ट सेटअप हो सकता है. सो टोटल इनकम ऑफ करंट ईयर इज 12,000 and total income of previous year is 32,000. लॉस आपके पास 45,000 का लॉस है. सो द होल लॉस हैज टू बी सेट अप अगेंस्ट बोथ ईयर्स टोटल इनकम. सो आप किसी भी सीक्वेंस से करें, 12,000 आपके पास करंट ईयर की टोटल इनकम के अगेंस्ट को लॉस को सेटअप किया और 32,000 आपने लॉस सेटअप किया अगेंस्ट द प्रीवियस ईयर टोटल इनकम. सो नेट इनकम दोनों सालों में आपके पास 0 हो गई. देन वी हैव टू पे मेक द लॉस मेमोरेंडम. तो यहाँ पे मेंशन करेंगे लॉस इन द ईयर एंडेड August 31 and 21. 31 अगस्त 21 को हमने लॉस सस्टेन किया था और ये था लॉस 45,000 का. आउट ऑफ दिस लॉस यूज इन ट्वेंटी 22 के टैक्स ईयर में जो लॉस यूज हुआ वो था 12,000 एंड लॉस यूज इन ईयर 2021 पिछले साल की टोटल इनकम के अगेंस्ट से लॉस यूटिलाइज हुआ वो 32,000 था. अब आपके पास कितना लॉस बचा है? 1,000 का लॉस आपके पास रिमेनिंग है. और ये 1,000 का लॉस क्या किया जा सकता है? कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है. और जब लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जाए तो वो टोटल इनकम के अगेंस्ट सेटअप नहीं होते बल्कि आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट के अगेंस्ट सेटअप होते हैं. सो ये 1,000 का लॉस है, इट इज़ टू बी सेटअप अगेंस्ट द ट्रेडिंग प्रॉफिट. सो 1,000 का लॉस आपके पास ट्रेडिंग प्रॉफिट के अगेंस्ट सेटअप होगा. ये लॉस रिलीफ फर्स्ट 2 ईयर में ट्रेडिंग प्रॉफिट के अगेंस्ट कोई लॉस रिलीफ ऑप्शन यूटिलाइज नहीं हो रहा. सो रिमेनिंग इनकम इन दिस ईयर इज़ 14,000. 12,000 is other income, so it will give you a total income of 26,000. This is said to be the net income of the person in that year. जबकि 23-24 में आपके पास कोई लॉस नहीं रह गया कि जो सेटअप किया जाए अगेंस्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट. सो इट इज़ द
trading profit and when you get the other income added in this, आपके पास 34,000 आ जाएगी अमाउंट. टोटल इनकम के अगेंस्ट भी लॉस सेटअप नहीं हो रहा, सो 34,000 ही इस साल की आपकी नेट इनकम है. लॉस मेमोरेंडम में बाकी का लॉस आपका यूटिलाइज हो रहा है इन द ईयर 22-23 एंड देयर इज़ नो लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड. कोई रिमेनिंग आपके पास लॉस नहीं बचा कि जिसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओपनिंग ईयर लॉसेस. सेम ऑप्शन अवेलेबल हैं एज दोज अवेलेबल फॉर ऑनगोइंग बिजनेस, लेकिन इसके साथ एक स्पेशल 3 ईयर कैरी बैक रिलीफ ऑप्शन भी अवेलेबल है जिसे अर्ली ट्रेड लॉस रिलीफ भी कहा जाता है. रिमेंबर दैट लॉसेस के हवाले से ओवरलैप नहीं होता. प्रॉफिट के हवाले से ओवरलैप का मतलब यह है कि एक साल का प्रॉफिट, एक जो पीरियड ऑफ अकाउंट में आपने प्रॉफिट अर्न किया है वो 2 डिफरेंट टैक्स ईयर में एसेस किया जाता है, तो उसे हम नाम देते हैं, वो प्रॉफिट जो आपके पास 2 डिफरेंट टैक्स ईयर में एसेस किया जा रहा है वो ओवरलैप ऑफ प्रॉफिट है. तो लॉसेस के हवाले से ओवरलैप नहीं है, मींस एक साल जो लॉस आपने सस्टेन किया है वो 2 डिफरेंट टैक्स ईयर में नहीं रिकॉर्ड किया जा सकता. सो देयर इज़ नो ओवरलैप ऑफ लॉसेस. स्पेशल 3 ईयर कैरी बैक रिलीफ अप्लाई होता है टू लॉसेस फॉर फर्स्ट 4 ईयर ऑफ ट्रेडिंग और ये क्लेम किया जा सकता है अगेंस्ट टोटल इनकम ऑफ 3 प्रीवियस ईयर. तो पिछले 3 सालों में चाहे बिजनेस नहीं था लेकिन उसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, उस इनकम के सोर्स के अगेंस्ट लॉस को सेटअप किया जा सकता है लेकिन ऑन 5-4 बेसिस. जैसे अगर लॉस सस्टेन किया है ईयर 22-23 में, तो 3 ईयर्स बैक आपके पास पहला टैक्स ईयर आता है 1920, तो लॉस सबसे पहले 1920 की टोटल इनकम के अगेंस्ट सेटअप होगा, फिर 2021 की टोटल इनकम के अगेंस्ट एंड देन 21-22 की टोटल इनकम के अगेंस्ट लॉस को सेटअप किया जाएगा. सो दिस इज़ मीन बाय 5-4 कि जो भी आपका लॉस सस्टेन हो रहा है टैक्स ईयर 22-23 में वो 3 ईयर्स बैक 22 में से 3 माइनस कर दें तो 19 आ जाता है. तो 1920 के टैक्स ईयर में सबसे पहले जो भी टोटल इनकम है उसके अगेंस्ट लॉस सेटअप होगा. देन उसके बाद अगर आपके पास लॉस बच जाए तो वो 2021 की टोटल इनकम के अगेंस्ट सेटअप होगा एंड देन 21-22 की. ड्यू डेट फॉर मेकिंग क्लेम कैन बी मेड फॉर 22-23 ईयर लॉस. आपका क्लेम किया जा सकता है 31 जनवरी 2025 को. Now question about this. Edward started trading on 1st July 2021. His tax adjusted results are 20,000 का उसने लॉस सस्टेन किया है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022 और प्रॉफिट अर्न किया है 60,000 फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 23. कैलकुलेट टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड अवेलेबल लॉस फॉर द टैक्स ईयर 21-22 एंड 22-23. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास लॉस सस्टेन हुआ है 20,000 फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022. बिजनेस स्टार्ट किया गया था 1 जुलाई 21 को, तो आपके पास फर्स्ट टैक्स ईयर आता है 21-22 और 1 जुलाई 21 से लेकर आपने 5 अप्रैल 22 तक के प्रॉफिट को असेस करना है फर्स्ट टैक्स ईयर में. तो ये पीरियड जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 मंथ्स का पीरियड है. तो अगर आपने 20,000 का लॉस सस्टेन किया है इन अ 12 मंथ पीरियड, तो 9 मंथ्स के पीरियड का कितना लॉस आपके पास 21-22 में रिकॉर्ड किया जाएगा, दैट इज़ 15,000. राइट, 15,000 का लॉस आपका टैक्स ईयर 21-22 से रिलेट करता है एंड रिमेनिंग लॉस आपका जो भी है आउट ऑफ 20,000 15,000 हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन द टैक्स ईयर 21-22. रिमेनिंग लॉस आपके पास 22-23 में रिकॉर्ड किया जाएगा. रिमेंबर लॉसेस ओवरलैप नहीं होते, सो दैट इज़ वाई हमने रिमेनिंग लॉस को कंसिडर करना है. सो ये आपके पास लॉसेस अवेलेबल हैं इन द टैक्स ईयर 21-22 एंड 22-23. नाउ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. This is test understanding 5 from the Kaplan study text. Lenz started business on 1st June 2022. His taxable trade profit are 11 months to 30th April 23. Loss है उसका 28,480 and then for the year under 30th April 24 profit उसने earn किया 35,000. Prior to starting business, Lenz has been employed और उसकी employment income आपके पास पिछले 3 सालों की mention है. 1920 की इनकम है उसकी 23,660, देन 5564 एंड देन 6120. इन एडिशन उसकी सेविंग इनकम भी हर साल है 1700 ईच ईयर. शो हाउ लेंस विल ऑब्टेन रिलीफ फॉर द लॉस
if he makes a claim of special opening year relief. सो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि लॉस का कितना पोर्शन किस ईयर से रिलेट करता है. एज शी हैज स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन 1 जून 2022, तो आपके पास पहला टैक्स ईयर कौन सा आएगा? दिस इज 22-23. और फर्स्ट टैक्स ईयर में आपने 1 जून 22 से लेकर 5 अप्रैल 23 तक का प्रॉफिट असेस करना. सो दिस इज़ द पीरियड ऑफ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. 10 मंथ्स का आपने प्रॉफिट असेस करना है. बट इस पीरियड में चूंकि लॉस सस्टेन किया है, और लॉस भी कितना सस्टेन किया है? लॉस इज सस्टेन ऑफ 28,480. तो 28,480 का लॉस सस्टेन किया है इन 11 मंथ्स पीरियड, राइट. तो आपने इसमें से 10 मंथ्स के पीरियड का लॉस असेस करना है इन द फर्स्ट टैक्स ईयर. तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 28,480 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 11, सो ये आ जाएगा 25,891 राउंड ऑफ करके. नाउ रिमेंबर, आपके पास ये जो पहला पीरियड ऑफ अकाउंट है ना, ये 11 महीने का मेंशन है. पीरियड ऑफ अकाउंट 11 मंथ्स का मेंशन है. अगर ये 11 मंथ्स का मेंशन है तो इसका मतलब है कि हमें ओपनिंग ईयर रूल के मुताबिक क्या आइडेंटिफाई करना है कि अगर आपका पीरियड ऑफ अकाउंट लेस दैन 12 मंथ हो तो किस पीरियड का प्रॉफिट असेस किया जाता है. दिस इज़ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इन द सेकेंड टैक्स ईयर. आप जिस पीरियड का प्रॉफिट असेस करते हैं वो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से लेकर नेक्स्ट 12 मंथ है, यानी 31 मई 23 तक का प्रॉफिट आपने असेस करना है इन द सेकेंड टैक्स ईयर. रिमेंबर द रूल ऑफ ओपनिंग ईयर कि आपके पास अगर बिजनेस नया स्टार्ट हो और उसका पीरियड ऑफ अकाउंट 12 महीने से कम हो तो इन दैट केस सेकेंड टैक्स ईयर में हम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से लेकर नेक्स्ट 12 मंथ तक का प्रॉफिट असेस करते हैं. इसमें डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 1 जून 22 से लेकर 30 अप्रैल 23 तक, इस पीरियड में तो हमने लॉस सस्टेन किया था. लॉस कितना सस्टेन किया था? 28,480. इस 28,480 में से 25,891 का लॉस हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, और लॉसेस ओवरलैप नहीं होते. लॉसेस ओवरलैप नहीं होते मतलब जो एक दफ़ा लॉस रिकॉर्ड हो गया वो दोबारा रिकॉर्ड नहीं होगा. तो 28,480 में से 25,891 का लॉस रिकॉर्ड हो चुका है. 28,480 में से 25,891 का लॉस रिकॉर्ड हो चुका है. तो अब इस सेकेंड टैक्स ईयर में आपके पास इन पहले 11 महीनों में जो लॉस रिकॉर्ड होना है वो 2589 का लॉस है, राइट. अगेन ये बात समझ लें कि अगर आपके पास पीरियड ऑफ अकाउंट 12 महीने से कम हो तो इन दैट केस आपको सेकेंड टैक्स ईयर में किस पीरियड का प्रॉफिट असेस करना है. दैट इज़ फ्रॉम 1 जून, यानी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से अगले 12 महीने. ये डेट ऑफ कमेंसमेंट से बिजनेस से अगले 12 महीने एंड होते हैं 31 मई 23. तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हमें सेकेंड टैक्स ईयर यानी 23-24 में जो प्रॉफिट जिस पीरियड का असेस करना है वो 1 जून 22 से लेकर 31 मई 23 है. अब 1 जून 22 से लेकर 30 अप्रैल 23 इस पीरियड में 11 महीने के पीरियड में हमने लॉस सस्टेन किया था. कितना लॉस सस्टेन किया था? 28,480. और इस 28,480 में से 25,891 का लॉस हम रिकॉर्ड कर चुके हैं. लॉसेस ओवरलैप नहीं होते तो रिमेनिंग लॉस हमने ये रिकॉर्ड कर दिया, यानी इन पहले 11 महीने में हमारे पास लॉस आ गया 2589. अब एक महीना बचा है, दैट इज़ मई 23. ये मई 23 का मंथ जो है वो सेकेंड पीरियड ऑफ अकाउंट में लाई करता है. दिस पीरियड ऑफ अकाउंट में ये लाई करता है, राइट. सो आपके पास अगर अगले साल 35,000 पूरे साल का प्रॉफिट अर्न किया है तो आपने उसमें से सिर्फ एक महीने का प्रॉफिट लेना है. एक महीने का प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 35,000 डिवाइडेड बाय 12. सो इट इज़ 2917. सो 2917 ये आ गया. तो अगर आप इसे नेट ऑफ करें 2589 लॉस है आपका, 2917 आपका प्रॉफिट है, तो उसे नेट ऑफ किया जाए तो ये आ जाती है अमाउंट आपके पास 328.
तो ये 328 की अमाउंट आपके पास आ रही है। तो सेकेंड ईयर में आपके पास लॉस नहीं आ रहा, प्रॉफिट आ रहा है 328 का। अब हमने अपने इन सालों में ट्रेडिंग इनकम वगैरह रिकॉर्ड करनी है 1920, 2021, 21, 22। तो पिछले सालों में आपके पास बिज़नेस तो हो रहा नहीं था, एम्प्लॉयमेंट इनकम थी आपकी, तो एम्प्लॉयमेंट इनकम रिकॉर्ड की जाएगी इन सालों में। ट्रेडिंग इनकम आपके पास कुछ भी नहीं है, तो ट्रेडिंग इनकम की जगह आप 0 मेंशन कर दें। एम्प्लॉयमेंट इनकम आपके पास इन सालों में गिवन है 23,660, $5,564 and the third one is 6,120. सेविंग इनकम हर साल 1,700 है। सो ये टोटल आपके पास आ जाएगी इनकम 06352। इस साल की टोटल इनकम आपके पास आ जाएगी 4627 एंड इस साल की इनकम 7820। दिस इज सेड टू बी टोटल इनकम। अब हमने लॉस सेटअप करना है। आपके पास लॉस सस्टेन किया था पीरियड 22-23 में। जो लॉस आप सस्टेन कर रहे हैं 22-23 के पीरियड में, उसे FIFO बेसिस में, क्योंकि हमने स्पेशल ओपनिंग ईयर रूल यूज़ करने हैं, तो उसे सबसे पहले 1920 के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेटअप, टोटल इनकम के अगेंस्ट सेटअप किया जा सकता है। लॉस सस्टेन किया है 22-23 में, 22 में से 3 माइनस कर दें तो आपके पास 3 साल पहले की इनकम 1920 की आती है कि जिसके अगेंस्ट लॉस को सेटअप करना है। लॉस कितना सेटअप करना है? दिस इज लॉस ऑफ 25,891। लेकिन आपके पास 1920 में तो इनकम ही टोटल 25,360 है। सो होल अमाउंट ऑफ इनकम इज सेटअप अगेंस्ट लॉस, सारी की सारी सेटअप हो जाएगी और नेट इनकम बचेगी 0। अब हमने लॉस सेटअप करना था 25,891। कितना लॉस सेटअप करना था? 25,891, और उसमें से हमने 25,360 का लॉस सेटअप कर लिया इन द ईयर 1920। रिमेनिंग लॉस रह गया 531 एंड इट इज़ टू बी सेटअप अगेंस्ट द इनकम, टोटल इनकम ऑफ 2021। तो ये 531 यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। सो इस तरह सारे का सारा लॉस आपका सेटअप हो जाएगा। दिस विल बी 76 and this income remains the same 7,820. So this is how आपके पास इस लॉस को सेटअप किया जाएगा, रूल को अप्लाई किया जाएगा। लॉस मेमोरेंडम आप बनाएंगे एंड अकॉर्डिंग टू लॉस मेमोरेंडम ट्रेडिंग लॉस है आपके पास टैक्स ईयर 22-23 का, और ये था आपका 25,891। लॉस यूज्ड इन 1920, और कितना लॉस यूज हुआ? 25,360 का। और लॉस यूज इन 2021, ये आपके पास रिमेनिंग 531 का लॉस यूज हुआ। इस तरह आपके पास रिमेनिंग लॉस 0 रह गया कि जिसे सेटअप करने की ज़रूरत है। सो दैट इज़ हाउ लॉस इज टू बी सेटअप। अब बात है टर्मिनल लॉस रिलीफ की। दिस इज सेट टू बी लॉस ऑफ लास्ट 12 मंथ। इट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि बिजनेस ही खत्म हो रहा है, आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इट कैन बी कैरी बैक अगेंस्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर ऑन लाइफो बेसिस, और ये कैरी बैक किया जा सकता है। दूसरी बात, अगेंस्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट, नॉट अगेंस्ट टोटल इनकम। ट्रेडिंग प्रॉफिट के अगेंस्ट ऐसे कैरी बैक किया जाता है कि सेटअप किया जाए। एंड इट इज़ कैरी बैक इन लाइफो, मीन्स कि आपके पास जो भी आपने टैक्स ईयर 22-23 में लॉस सस्टेन किया है, पहले आप इसे सेटअप करेंगे अगेंस्ट द ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ 21-22, देन 2021 एंड देन 1920। सो ये लाइफो बेसिस पे सेटअप किया जाएगा। कैसे इसे कंसिडर किया जाएगा लॉस को? दिस इज सेड टू बी कि आपके पास 6 अप्रैल बिफोर सीजेशन टू डेट ऑफ सीजेशन, यानी जिस डेट को बिजनेस ख़त्म हुआ है उससे पहले जो 6 अप्रैल की डेट आती है, उस डेट से लेकर बिजनेस क्लोज होने की डेट तक के प्रॉफिट को आप असेस करेंगे या लॉस को आप असेस करेंगे।
फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ईयर एंडिंग डेट है 30 जून 2022 कि जिस डेट को बिजनेस क्लोज डाउन किया जा रहा है, डेट है आपके पास 30 जून 2022 कि जिस डेट को बिजनेस क्लोज किया जा रहा है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि यू नीड टू असेस लॉस फॉर द पीरियड ऑफ 6 अप्रैल 22 टू 30 जून 22 कि क्लोजिंग डेट से पहले जो आपके पास 6 अप्रैल आती है उस डेट से लेकर क्लोजिंग डेट तक का लॉस असेस किया जाएगा। फिर जो भी ओवरलैप प्रॉफिट हो वो उसमें ऐड कर देंगे। देन उसके बाद 12 मंथ बिफोर सीजेशन टू द 5 अप्रैल बिफोर सीजेशन, यानी आपने ये देखना है कि बिजनेस अगर आपका क्लोज डाउन हुआ है 30 जून 22 को, तो उससे पहले के 12 महीने का पीरियड कब स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई को। तो हमने 1 जुलाई 21 से लेकर 5 अप्रैल 22 तक के प्रॉफिट को, लॉस को असेस करना, क्योंकि इससे आगे का लॉस तो हम पहले असेस कर चुके हैं। सो दैट इज़ हाउ इट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड, इट हैज़ टू बी मैंशन। सो अगेन ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग है कैप्लन से। यू हैव सीज ट्रेडिंग ऑन 30 जून 22, यहाँ पे भी आपके पास क्लोजिंग डेट 30 जून 2022 है। His final period of trade was the 9 months to 30th June 2022 and before that he prepared account annually to 30th September, यानी इसका जो लास्ट फाइनल पीरियड है जिसमें वो लॉस सस्टेन कर रहा है ये 9 मंथ्स का पीरियड है। सो इट मीन्स कि ये पीरियड 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ होगा। एंड बिफोर दैट ही प्रिपेयर्ड अकाउंट एनुअली टू 30th September. His tax adjusted trading results are as follows. 9 months to 30th June 22 उसने लॉस सस्टेन किया 7200 पाउंड्स का। फॉर द ईयर एंडेड 30th September 21 प्रॉफिट अर्न किया 100। फॉर द ईयर एंडेड 30th September 20 प्रॉफिट है 7300 एंड फॉर द ईयर एंडेड 30th September 19 प्रॉफिट है 7500। He has overlap profit of 1800 brought forward. Yev has no other sources of income. Calculate the terminal loss available to him and show how relief may be obtained for it. So as per rule we have to consider loss from the period 6th April 22 to the date of closing down the business, that is 30th June 22. So this is the period of 3 months. The loss sustained is 7200 and this is the loss sustained in 9 months period, and we have to consider the loss for 3 months. So it is 2400. Next we need to consider the overlap of profit. Overlap of profit is given to use as 1800. This is overlap of profit which is given to you in the question as this 1800. And then we have to consider as per rule 12 months before closing down the business, and that date is 1st July 21 to the 5th April 22. This date we have to consider what is the profit or loss. As we have been given that this is 9 months to 30th June 22, in which period we have sustained a loss of 7200. So this 9 months period starts from which date? If a 9 months period end date is 30th June 22, then what is the starting date of this 9 month period? So if you consider, it is a date of 1st October 21, right? So we have to consider this period, that is a period of 6 months. This is the final period, 6 months, included in the 9 months period in which we have sustained loss. So if 7200 is a loss that is sustained in last 9 months, what is the loss for 6 months? That we have to consider, and that is 4800, right? Now we have to consider this period from 1st July 21 to 1st October 21. This is the period of 3 months, right? And this period belongs to a period of account in which we have earned a profit of 100 in the year to 30th September 21. So if in a whole year we have earned a profit of 100, what is the profit to be recorded for this 3 months period? If 100 is a profit for the whole year, what is the profit for 3 months?
So it will be 25. So we have to adjust this. 25 is a profit, 4800 is a loss, and when we have when we'll set up this, it will be 4775. This is the amount of loss that we have to adjust. So the total would be 42 and 47, 8975. This is the total loss that we have to sustain. And as per rule of terminal loss, the terminal loss can be carried back to 3 years, right? But on LIFO basis. So the final year in which we have loss sustained is 22-23. So there is no trading profit in this year, and obviously no loss relief, no revised profit for this year. In 21-22, the previous year, we have to use the current year basis. The year ended on 30th September 21, lies in a tax year 21-22, and in this year we have earned a profit of 100. Before that, it is 7300 and 7500 profit. This is the profit given to us. The total loss is 8975. So we have to use the loss memorandum as well. Total loss is 8975. Loss used in 21-22 is 100, right? So 100 of loss is to be set off here, and there is no revised profit for the tax year 21-22. Again, 7300 of loss is to be set off in the previous year, as we have to follow the LIFO basis in the terminal loss relief option. So 7300 of loss is to be set off against the trading profit of 2021. So again, the income of 2021, revised profit of 2021 is 0, and here loss used in 2021 gives you an amount of 7300. So after setting off loss of 100 and 7300 in the tax year 21, 22 and 2021 respectively, we have remaining loss available to be set off is, it is 8975. First 100 loss is set off in 21-22, remaining 7300 loss is set off in 2021. Now 1575 of loss is available to us that can be set up against the income of 1920. It is 1575 loss that is to be set up. So remaining profit would be 5925. This is said to be revised profit, and loss used in 1920 is 1575. So that is how terminal loss is identified and set off. Now an example about the total income, where we have been restriction given about the adjusted total income. The rules are given. Let me show you the rules. Restriction of relief against total income. The maximum loss that can be relieved is 50,000 or 20% of adjusted total income. What is meant by adjusted total income? It is said to be total income less gross personal pension contribution. It is said to be total income less gross personal pension contribution. This is about the adjusted total income. Remember, the adjustment of personal allowance is based on adjusted net income, which is different, as adjusted net income is the calculation of net income by subtracting gross personal pension contribution as well as gross gifted donation from the total income, from the net income, sorry. Here adjusted total income is calculated as total income minus gross personal pension contribution, and now 50,000 or 25% of adjusted total income, whichever is higher, is the maximum amount that can be relieved. But another important point is that this restriction does not apply where a loss is relieved against profit of the same trade for the preceding tax year. The restriction only applies to the offset of losses against other income in that year.
So it is applicable on the other income in that year. So here in this question, again from the Kaplan study text, Sheetal is a sole trader and has adjusted trading result as follows. Year ended to 30th November 21. She has earned a profit of 64,000, and for the year ended 30th November 2022, she has sustained a loss of 1,27,800. She has saving income of 63,000 each year but no other income. She makes gross personal pension scheme contribution of 5,725 each year. Sheetal wishes to offset the trading loss against her total income for the tax year 22-23 and then 21-22. So you have been given the option how she is utilizing to set up the loss. First, she is setting off her loss against the total income of current year 22-23 and then the previous year 21-22. Calculate Sheetal's taxable income for the tax year 21-22 and 22-23. Assume that the rates and allowances for the tax year 22-23 apply throughout. Now, as per her option, first we have to set up the loss against the year 2022-23 and then 21-22. So, what are her trading income of these year? In the year 22-23, there is no income, but in the year that ended on 30th November 21, she has an income of 64,000. And saving income, that is 63,000 each year. So the total income of Sheetal is 1,27,000 and 63,000 respectively in 21-22 and 22-23. So now we have to give the loss relief. As per rule, if we are using the other income to set off against the loss, then there is a maximum restriction rule is to be applied. So first we need to consider what is the 25% of adjusted total income. So for this we have to calculate the adjusted total income, and adjusted total income is said to be total income minus gross personal pension contribution. So here in the year 22-23, the total income is 63,000. If you deduct 5,500 and 5,725 from this, you will get a figure of 57,275. And 25% of this is obviously less than 50,000. So you can find it out as well. This is 57,725 multiplied by 25%. This is 14,431. And this is to be compared against 50,000. Now, whichever is higher is the maximum amount of relief that is available. So, it is a 50,000 of loss that can be set off in the year 22-23 as per restriction applicable on other income. So, remaining income is to be recorded as 13,000, right? Now, if you prepare the loss memorandum, loss is total 1,27,800. $1,27,800. Now we have to consider that 50,000 of this loss is utilized in the tax year 22-23, used in
2223. So remaining loss is 1,27,800 minus 50,000. So remaining loss is 77,800. So 77,800 of loss is available now. That is to be set off against the income of 2122. So first you need to consider that if it is to be set off against trading income, 64,000 of, there is no restriction to be applied. So 64,000 of loss is set off against the trading income of 2122. If loss is to be set off against the trading income, there is no restriction rule to be applicable. Then if loss is to be, now remaining losses, total losses 1,27,800, 50,000 of loss is set off in 2223, 64,000 of loss is to be set off against the trading income of 2122. Now the remaining loss would be 13,800. So here restriction can be applicable, but 13,800 is well under the limit of 50,000. So whole amount of 30,800 is set off against the saving income. So whole loss is set off, and the trading income in the year, or total income in the year 2122 is 0. So that is how loss is relieved when maximum restriction is to be applied. So this is about the trading losses for individual. And we have discussed here in this topic the ongoing year rules to set off losses, that is loss is set off against the total income, and loss can be carried forward to set off against the trading profit, and in between them, after the total income, loss can be set off against the chargeable gain. Then we have opening year rule. Special opening year rule is given to set off the losses in the opening years, and in accordance with this rule, we can set off the losses in previous 3 years total income against the previous 3 years total income on FIFO basis. And then there is a terminal loss. Terminal loss is available can be set off against the previous 3 years trading profit. Now it is about choice of loss relief. Which loss relief is to be applied against total income? If we apply the rule, or we can set off the losses against the total income, in this case this relief is said to be quick as compared to carry forward, but involve loss of personal loss. But as a result of choosing to set off the losses against the total income, you have to lose your personal loans, but it is considered as quick as compared to the carry forward option. So if you have been given a choice that the trader want to set off the losses as soon as possible, then you have to consider that you have to apply the loss relief, the total income loss relief.